Good morning to you all. Hope you all are well. Tomorrow is Raksha Bandhan. So in advance, I would like to say Happy Raksha Bandhan to you all. In this sixth lesson, some question answers are left. So today we are going to see those question answers which are left. In long answer type questions, हमने galvanizing देख चुका था, note down कर चुका था galvanizing. Today we are going to see electroplating. Today we are going to see electroplating. What is electroplating? When mixed with certain collision resistance collision resistant metal or some non-metal iron forms alloy which are resistant to
resistant to rusting. Stainless steel an alloy of iron, nickel, and chromium does not rust. Explain the following में हम देख रहे हैं electroplating. What is electroplating? When mixed with a certain collision resistance metal. When mixed with certain collision resistance metal or some non-metal, iron forms alloy. Iron किस में बदलता है? Alloy में बदलता है. Which are resistant, जिसको हम resistant कह सकते हैं. किस में? To rusting. Stainless steel एंड एलॉय. स्टेनलेस स्टील क्या है? एलॉय है. किसका एलॉय है? आयरन, निकल, क्रोमियम, ये तीनों मिलकर स्टेनलेस स्टील बनाते हैं. इसलिए स्टेनलेस स्टील पे रस्ट नहीं पड़ता है, जंग नहीं लगता है. Raise the board now. Completed? If completed, then raise your hand. All of you. Have you understood it? समझ में आया ये आपको? Naman, what about you? Have you noted down? Your very short answer type question, short answer type question and long answer type question has been finished. Now we are going to see match the following and fill up the blanks. Match the following is your homework. You have to do it in your homework. Match the following. Column A, column B. A, chemical changes one, rust. B, magnesium hydro oxide.
magnesium hydroxide. Chemical change. C. Physical changes. Irreversible. D. Rusting of iron. 4. Turn red litmus paper blue. E. Iron plus oxygen plus water. 5. No new substance is formed. मैच द फॉलोइंग में हमने आपको ये होमवर्क में दिया है, यू हैव टू डू इट इन योर होमवर्क. क्लियर? Only match the following that I am giving you in homework. Try to solve it. If you are unable to solve it, then tomorrow I will, so day after tomorrow I will note it down again. केमिकल चेंज. केमिकल चेंज के साथ में यहाँ से आपको चूज करना है हम किसको मैच करेंगे केमिकल चेंज के साथ में. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनके साथ में भी आपको यहाँ से चूज करना है. ऑप्शंस आर गिवन हियर. फिजिकल चेंज, ऑप्शंस आर गिवन हियर. यू हैव टू चूज इट बाय योरसेल्फ. रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का भी यहाँ पर आंसर है. यू विल हैव टू मैच इट बाय योरसेल्फ. इफ यू आर अनेबल टू मैच इट देन टुमारो, डे आफ्टर टुमारो आई विल लेट यू नोट इट डाउन अगेन. Iron plus oxygen plus water. Answer is given here. Have you noted down your homework? Are you able to do it by yourself? Can you do it by yourself? Okay. Now the sixth one that we are going to see here is fill in the blanks.
A. When baking soda is added to vinegar, gas is fill in the blanks. नोट कर रहा है ना, करने में क्या दिक्कत है? When baking soda is added to vinegar, carbon dioxide gas is produced. जब हम बेकिंग सोडा मिलाएंगे विनेगर, व्हाट इज विनेगर? विनेगर इज अ टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव. व्हाट इज विनेगर? विनेगर इज अ टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव जिससे हम पिकल्स और सलाद इनको हम प्रिजर्व करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड. व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड. Thank you. Time is running out. If you didn't note it down, take the screenshot of it quickly.